गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज चैप्टर 8 हेरिडिटी से थर्ड प्रैक्टिस लेक्चर जो कि एमसीक्यू के रूप में होगा वो हम कराने जा रहे हैं। तब तक आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों, आज के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू स्टडी द नेचुरल फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस। टू स्टडी द नेचुरल फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट। मतलब नेचुरल फिनोमिनन ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए मेंडल ने पी प्लांट का चयन किया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वर सुटेबल फॉर देयर स्टडीज। कौन सी प्रॉपर्टीज उनके लिए, उनके स्टडीज के लिए सुटेबल थी। फर्स्ट इज प्लांट वुड इजीली सेल्फ पॉलिनेट एंड क्रॉस पॉलिनेट इन नेचर। ये प्रॉपर्टीज इज नॉट सुटेबल। Plant would easily grow in garden soil with considerably shorter generation time. छोटे समय में ही, that is plant was annual, and so this is correct. And pea plant do not require true breeding for hybridization experiment. Pea plant do not require true breeding for hybridization experiment. This is not true. Hybridization experiment. This is not true. Okay. Pea plant do not require true breeding for hybridization experiment. This is not true because true breeding चाहिए. Many part of plants such as pod, seed, flower, cotyledon show distinct phenotype. This was the one of the most important that उनको 7 traits चुनने में मदद किया मेंडल को। तो कौन से ऑप्शंस हो गए? एक ये भी सही है। तो ए ऑप्शन इज 1, 2 and 3 इज करेक्ट। 1 इज नॉट करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन इज 2 and 4। योर 2 इज करेक्ट एंड 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो 2 and 4 इज करेक्ट। ओके, दिस इज 2। सो गो थ्रू ऑप्शन बी। 2 and 4 इज करेक्ट। C 1 and 2 not correct. D 2 and 2, 3 and 4 not correct. So option B is the correct answer. Okay. तो second is consider the following two statements. दो statement को consider कीजिए। पहला statement है the trait that express itself in F1 generation. एक ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में। सेकेंड इज द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक ट्रेट है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर में पासिंग होता रहा है। दैट इज द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए आपका एप्रोप्रिएट टर्म क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। द ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में, वी कॉल इट डोमिनेंट ट्रेट। सेकंड स्टेटमेंट इज, दूसरा स्टेटमेंट है कि द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक ट्रेट पास कर रहा है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसके लिए जो टर्म होता है दैट इज इनहेरिटेंस। ओके, तो विच ऑप्शन इज दिस? फर्स्ट इज रिसेसिव। ये दैट इज ए ऑप्शन इज रिसेसिव डोमिनेंट। तो फर्स्ट इज डोमिनेंट नॉट रिसेसिव, सो दिस ऑप्शन इज डजंट बिकॉज ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट, लेकिन यहां पर दिया है रिसेसिव। एंड सेकंड के लिए जो टर्म है द ट्रेट दैट कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसके लिए टर्म होगा इनहेरिटेंस, जो कि यहां डोमिनेंट दिया है। दिस इज नॉट करेक्ट। अब बी इज द ट्रेट दैट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट एंड द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज रिसेसिव। दैट इज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करने वाले के लिए रिसेसिव टर्म उचित नहीं है। ओके, अच्छा, सो दिस इज नॉट करेक्ट। थर्ड, the trait that express itself in F1 generation is dominant. This is correct. And the trait that keeps on passing from one generation to another is
इनहेरिटेड ट्रेट, दिस इज करेक्ट। ओके, फिर इसके लिए देखिए ये नॉट करेक्ट, ये करेक्ट बट नॉट करेक्ट, टोटली नॉट करेक्ट। ओके, तो सो विच इज करेक्ट आंसर? सी इज योर करेक्ट आंसर, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव। इसके लिए जो होगा अप्रोप्रिएट टर्म डोमिनेंट और रिसेसिव। फर्स्ट के लिए जो टर्म होगा वो डोमिनेंट होगा और सेकंड के लिए जो टर्म आएगा वो रिसेसिव आएगा। ओके बच्चों, अब वी आर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए बच्चों। नाउ वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। वी आर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज द information source of making protein in the cell, source of making, the information source of information source for making protein, source for making protein, making information source for making protein in the cell, in the cell is the a chromosome, B DNA, C option enzyme, D option is nucleus. The information source for making protein in cell is your best answer, that is DNA. DNA is the information source for making protein in cell. Second is fourth question, fourth MCQ. In which of the following animal, in which of the following animal किसमें animals individual can change sex, individual can change sex, can change sex, किस एनिमल में इंडिविजुअल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, दैट इज यू हैव गिवन ऑप्शन ए इज स्नेल। बहुत सारे एनिमल्स में एनवायरमेंटल सेक्स चेंज होते हैं। ए इज स्नेल, बी इज वी ह्यूमन, सी इज
fruit fly, Drosophila melanogaster, fruit fly, and D, all. The kiss animal individual can change sex. That is, your answer is A, snail. In which of the following animal individual can change sex? That is your snail. Now, fifth question. Which of the following ratio, which of the following ratio can prove law of independent assortment? Law of independent pendant assortment. A is 1:3:1. B is 2:1:1. C is 9:3:1. D is 2:1. 2:1. तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो कैन प्रूव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और वो एक डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट इज 9:3:3:1. एंड ये रेशियो जो है प्रूव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. फिफ्थ क्वेश्चन हो गया. नाउ वी कंफर्म सिक्स्थ क्वेश्चन. Sixth question is, now sixth question. Sixth question is your, what will be percentage? What will be the percentage of purple stemmed plant in the F2 generation? In the F2 generation, when the F1 generation, resulted due to cross breeding of green stemmed capital G green stemmed tomato plant
and self-pollinated. Green stem tomato plant F1 generation resulted due to cross breeding of uh, green stemmed plants sorry resulted due to cross breeding of green stemmed tomato plant with purple स्टेम्ड पर्पल स्टेम्ड रिसेसिव है इसलिए इसको छोटा सा लिखना पड़ेगा पर्पल स्टेम्ड दैट इज स्मॉल जी टोमेटो प्लांट ये रिसेसिव कैरेक्टर को टोमेटो प्लांट आर self pollinated ओके देखिए बच्चों व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड प्लांट दैट इज जी तो परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड प्लांट इन द F2 जनरेशन किस जनरेशन में परसेंटेज चाहिए F2 जनरेशन में किसका पर्पल स्टेम्ड प्लांट का ओके व्हेन F1 जनरेशन रिजल्टेड ड्यू टू F1 जनरेशन कैसे आया रिजल्टेड ड्यू टू अ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो प्लांट विथ पर्पल स्टेम्ड टोमेटो प्लांट के क्रॉस ब्रीडिंग से आया F1 जनरेशन तो F2 जनरेशन में पर्पल स्टेम्ड प्लांट जो होगा उसका परसेंटेज क्या होगा दिस इज F1 जनरेशन ओके तो अब क्या हुआ कि व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड प्लांट इस स्टेम्ड प्लांट की परसेंटेज क्या है F2 जनरेशन में जबकि ये F1 जनरेशन जो है रिजल्टेड ड्यू टू क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ ग्रीन स्टेम्ड एंड पर्पल स्टेम्ड टोमेटो प्लांट तो दिस इज F1 जनरेशन F2 जनरेशन में यू हैव क्रॉस मतलब कि F1 जनरेशन में F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करा दिया गया F1 जनरेशन और F1 जनरेशन को क्रॉस करा दिया दैट इज क्रॉस के लिए यू नो परनेट स्क्वायर दैट इज F2 जनरेशन में क्या हो जाएगा दिस F1 दैट इज दिस क्रॉस जैसे कि F1 जनरेशन को क्रॉस कराया गया तो परसेंटेज आपको बताना है ओके दिस इज F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन दिस इज F1 जनरेशन आप इसको लिखेंगे F1 जनरेशन ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट दिस इज ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट एंड पर्पल स्टेम्ड टोमेटो प्लांट को क्रॉस करा के ये इसको ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो प्लांट एंड पर्पल स्टेम टोमेटो प्लांट के क्रॉस से F1 जनरेशन आया दिस इज व्हाट ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो प्लांट और दिस इज पर्पल स्टेम टोमेटो प्लांट से F1 जनरेशन आया और F1 जनरेशन में क्रॉस कराया गया दिस इज F1 के साथ इसका क्रॉस देन यू गेट F2 जनरेशन में यू दिस परनेट स्क्वायर यू बनाइए जी स्मॉल जी अपने ही जनरेशन में F1 इंटू F1 ही हो रहा है दैट इज जी देन यू गेट जी कैपिटल जी दैट इज दिस तो आस्किंग दैट परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड प्लांट इन F2 जनरेशन पर्पल स्टेम्ड प्लांट का F2 जनरेशन में परसेंटेज ओके तो ये क्या हो गया जैसे कि हम लोग टॉल और शॉर्ट पे जब ब्रीड कराते थे उसी हिसाब से इसको भी हमको रखना है बिकॉज हियर ग्रीन स्टेम्ड प्लांट इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर एंड पर्पल स्टेम्ड टोमेटो प्लांट इज रिसेसिव कैरेक्टर तो यहाँ ये जो है ग्रीन स्टेम्ड प्लांट का परसेंटेज देखिए टोटल मिला के अगर 100 करते हैं तो 25 75%
इज ग्रीन स्टेम्ड प्लांट, एंड दिस क्या बचा 25% जो है वो आपका बच गया पर्पल स्टेम्ड प्लांट। तो ऑप्शन यहां है आपका ए इज 10%, बी ऑप्शन इज योर 25%, सी ऑप्शन इज योर 75%, डी ऑप्शन 50%। आपको कौन सा सही लग रहा है? बिकॉज दिस इज 25 मतलब ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट जो है वो 75% है और पर्पल स्टेम दिस इज 25%। सो गो थ्रू ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस इज 6th MCQ। अब 7th, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए बच्चों। 6th, seventh question now. Seventh question is, वीडियो के अंत तक बने रहिए बच्चों। Seventh question is, if pure tall pea plant, if pure tall pea plant is crossed with pure tall pea plant is crossed with pure dwarf pea plant, crossed with pure dwarf pea plant, pure dwarf pea plant, what will be the percentage? What will be the percentage of F1 and F2 generation of F1 and F2, percentage of F1 and F2 generation respectively will be tall। तो बच्चों ध्यान से, प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, tall plant pure is crossed with pure dwarf plant, what will be the percentage of F1? पहले F1 generation में gamete this T and this T, this is F1 generation। F1 generation कैसा हुआ? Pure tall। F1 generation is pure tall, this is a pure tall। तो F1 generation में परसेंटेज कितना है टॉल का? दैट इज F1 जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल थे, F1 जनरेशन में जो परसेंटेज है दैट इज 100% टॉल। ओके, F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन में जो टॉल की परसेंटेज है वो कितनी है? 100%। ओके, इन F1 जनरेशन क्या हो गया? 100% टॉल। ओके, अब देखिए फिर F2 जनरेशन में टॉल का परसेंटेज। अब F2 जनरेशन इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्रॉस ब्रीडिंग जब होता है तो देन यू गेट दिस इज गैमेट F1 जनरेशन, दिस इज व्हाट T टॉल शॉर्ट। तो देखिए मतलब कि ये टॉल ये शॉर्ट, मतलब परसेंटेज ऑफ टॉल इज 75% एंड शॉर्ट इज 25%। दिस इज 25, शॉर्ट इज 25, परसेंटेज ऑफ टॉल इज 75। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ?
मतलब जिसको क्रॉस कराया गया तो बना F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो सेकेंड फिलियल जनरेशन में दिस, और ये यहां पर द सेकेंड फिलियल जनरेशन में क्या है कि परसेंटेज ऑफ टॉल इज 75%। इन F2 जनरेशन क्या थे, 75% टॉल। सम ऑप्शन में बी गिवन लाइक दिस, ए इज 25%, 25%, B is 50%, 50%, C is 75%, 100%, D option is 100% और 75%। ये इस तरह का ऑप्शन होगा आपका। तो इस ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन लग रहा है, दैट इज डी, 100% F1 जनरेशन में और 75% हो गया F2 जनरेशन में। सो गो थ्रू डी ऑप्शन। ओके, तो F1 जनरेशन में जब प्योर टॉल और प्योर डार्क प्लांट को हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में पूरे के पूरे टॉल होते हैं, दैट इज 100% टॉल। वही बात F2 जनरेशन की जाए तो F2 जनरेशन में 75% टॉल, मतलब 3:1 के रेशियो में है। तो 3:1 दैट इज 3:1 के रेशियो में है। सो 75% विल बी टॉल एंड 25% विल बी शॉर्ट। तो टॉल का जो रेशियो है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में वो क्या हो गया, F1 जनरेशन में 100% टॉल और F2 जनरेशन में 75% टॉल। ओके, अगर शॉर्ट की पूछता तो 25% शॉर्ट। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। MCQ type question is important for you। 20 MCQ टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहेंगे। जिसमें कि असर्शन रीजन भी रहेगा। नाउ 8th क्वेश्चन। Eighth question is, which one of the following statement, which one of the following statement is incorrect? Here incorrect, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए इज डीएनए हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डीएनए हैज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन DNA has the complete information for a particular characteristics, characteristics. Okay, characters. B option is DNA is the molecule responsible for the inheritance of character, the inheritance of character from parents to offspring, okay, from parent to offsprings। डीएनए मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सी इज चेंज इन इंफॉर्मेशन
in information, change in information will produce different protein, a different change in information will produce a different protein. Change in information will produce a different protein. And D is characteristics will remain the same, remain the same even if protein changes. This is false. Even if protein changes, even if protein changes. Okay, so characteristics will remain the same even if protein changes. Bachcho, which of the following statement is incorrect? DNA has complete information for particular characteristics. This is correct. DNA is the molecule responsible for inheritance of character from parent to offspring. This is also correct. Parent to offspring. This is correct. Change in information will produce different protein. This is correct. Characteristics will remain the same even if protein changes. This is incorrect. Okay, the which is answer is D. So answer D, because D is incorrect only. D ही केवल इनकरेक्ट है. तो बच्चों ये चैप्टर 8 हेरिडिटी का प्रैक्टिस लेक्चर 3 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन थे और यही समाप्त होने जा रहा है. अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.